Starting with the name of Allah, the most merciful, respectful guest speaker, Zain Ullah Fayyaz, and my dear audience, Assalamu alaikum. I hope you all are doing really great. I am Nurul Sabah, and today I am going to moderate this webinar, which is on the topic Sushi Exchange Program. Let's have an introduction to the speaker. Zain Ullah Fayyaz, a dedicated third-year MBA student at Qaeda Medical College, Bahawalpur, passionate about capturing moments. Zain is not just a student but also a talented freelance photographer and content writer. Beyond academics, he has carved his own path with his brand Topistan and skillfully manages a brand Hawk and a DJ. Zain's love for music and his creative endeavors extend to his blog on Instagram, Met with Zain. Join us in welcoming this multi-talented individual, Sushi 2023 participant and creator extraordinaire. Thank you so much, Zain, for joining us. Over to you. Thank you. Thank you so much, Noor, and the entire Scholarship Insights team. Thank you for having me. We will be beginning shortly. Noor, can you just let me know that if my voice is audible? Noor, am I audible? Yes, you are audible. Okay, for sure. So I'll be presenting my screen and I'll be carrying forward there. Noor, can you see my screen? Yeah, I guess it is being shared. Okay. Good evening, everyone. My name is Zain Ullah Fayyaz, and I am a third-year medical student at Qaeda Medical College, Bahawalpur. Beyond that, I was recently selected for the prestigious SUSI exchange program hosted by the University of Massachusetts and the Donahue Institute, funded by the United States Department of State. I was a SUSI alumnus in 2023, and today we are going to talk about the SUSI exchange program for 2024, for which the applications are now open, and the deadline to apply is 11:59 p.m. 5th of November. Essentially, it means 6th of November, like before beginning of the 6th of November. So we will be moving forward. Before starting, just to let you guys know, if you guys need to reach out to me, you can reach out to me via this Instagram handle. I manage a blog on Instagram named MidWithZ. Also, you can reach out to me via Twitter or my email ID, which is imzan@gmail.com, but Zan with a double N. I will be continuing my session in like dual language. मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों switch करता रहूँगा so that सबके लिए आसानी हो. So beginning with what is SUSI exchange program. So SUSI means Study of the United States Institutes. SUSI तीन तरह के होते हैं. It's not just the SUSI for student leaders. अब essentially SUSI चार हो गए हैं, but three of them are hosted by the UMass flagship campus in Amherst, Massachusetts, whereas the others are hosted, one of which is the SUSI for women, which is female only, and it is hosted by the University of Kansas, and we will be talking about it later in this presentation. So एक होता है SUSI for scholars, वो PhD वाले लोगों के लिए होता है, वो political development वगैरह को focus कर रहा होता है. The next one is SUSI for economic empowerment, but वो Middle East and North African countries के लिए होता है, which include Jordan, Tunisia, etc. ये वाली. और तीसरे नंबर पे होता है SUSI for student leaders for comparative public policy making, and this is an exclusive program for Pakistani undergraduate students. This program is a 5-week exchange program, और इसके लिए आपके पास पाकिस्तान nationality होना ज़रूरी है. People who are now a Pakistani permanent resident, especially catering those जो अफगानिस्तान से मूव हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और who have lived in another country but अब पाकिस्तान के permanent residents हैं and studying in a public or a semi-government university in Pakistan can also apply. This program focuses on comparative public policy making. Comparative public policy making means यार किसी भी मुआशरे को चलाने के लिए एक पॉलिसी होती है जिसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, और उस पॉलिसी को बनाते किस तरह से हैं ये उसके ऊपर पूरा रोटेट करता है पूरा प्रोग्राम. बट essentially it is compared between Pakistan and the US. So we are the representatives from Pakistan
who are sitting in a US environment. We have our student mentors who are more or less the undergraduate students studying in the United States, and they provide you an overview of the United States policy making and their own perspective and how it is in the United States versus Pakistani. हम होते हैं तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, we exchange our remarks कि पाकिस्तान में किस तरह हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरह हो रहा है. सो इसके अंदर प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. दिस प्रोग्राम है सेमिनार्स, रीडिंग लेक्चर्स होते हैं जिसके अंदर आपको बस एक केस सिनेरियोज वगैरह दे देते हैं, केस स्टडीज होती हैं, आपने उसको रीड करना होता है, बाद में उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, आपको मूवीज रिकॉर्ड करनी होती हैं, डिजिटली प्रेजेंट करना होता है. बहुत मज़े का प्रोग्राम होता है, बहुत इंक्लूसिव होता है और हर एक एस्पेक्ट पे बात होती है. लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि इसके एंड के ऊपर कोई एग्जाम नहीं देना पड़ रहा होता. यू डू नॉट हैव टू पास एन एग्जाम टू गेट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट. यू जस्ट हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन एवरीथिंग. अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, एंड यू विल गेट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट. ऑल्सो this program is hosted by the UMass, United States University of Massachusetts, based in Amherst, Massachusetts, or this is the largest UMass campus, or it is 2 hours from Boston. Boston is the capital of Massachusetts state. ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर प्रेजेंट है और वहाँ से बॉस्टन से आपको 2 आवर की ड्राइव है टू यूमेस. और यूमेस एक पूरा, एमएस एक छोटा सा टाउन है और उसके अंदर यूमेस है. जो एमएस का मेन पर्पस है वो एक स्टूडेंट ओरिएंटेड सिटी कह सकते हैं. वो टाउन इतना बड़ा नहीं है लेकिन उसके अंदर 30,000 students are studying at the University of Massachusetts alone. So you can just have an idea how big University of Massachusetts is. Also इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड स्टडी टूर होता है. इस प्रोग्राम के अंदर साइट विजिट्स होते हैं, लीडरशिप एक्टिविटीज होती हैं, ऑल्सो व्हाट डू वी से कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, ऑल्सो रिलीजियस प्लेसेस पे भी लेके जाया जाता है, विच इंक्लूड्स जूइश प्रेयर प्लेस. ऑल्सो उसके अलावा आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए आपको फूड ड्राइव्स के लिए लेके जाया जाता है, सर्वाइवल सेंटर्स के लिए लेके जाता है. एमएस सर्वाइवल सेंटर का एक फूड बैंक्स होते हैं, उसके टूर्स कराए जाते हैं, एवरीथिंग. अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर किस किस चीज़ों के ऊपर बात होती है. सो इट मूव्स मोर और लेस, इट मूव्स अराउंड द यूनाइटेड स्टेट फेडरलिस्टिक सिस्टम. इसके अंदर एनजीओज का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को आगे बढ़ाने में, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटीग्रेट किया हुआ है. डेमोक्रेसी इन यूनाइटेड स्टेट इज़ वेरी डिफरेंट टू द डेमोक्रेसी इन इंडिया. हर मुल्क की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अपनी है, बट यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान को वहाँ पर कंपेयर किया जाता है. इसके अंदर हम बस ज़्यादातर पॉलिसी एरियाज़ को बात करते हैं. अगर मैं टॉपिक्स की बात कर लूँ तो इसके अंदर पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, रेसिज्म और हाउ टू काउंटर रेसिज्म, द ब्लैक हिस्ट्री, द वॉर, द सिविल वॉर, और इसके अलावा द प्रिजन सिस्टम, इसके ऊपर भी बात होती है. इन सब के ऊपर बात होती है. मूविंग नेक्स्ट, आई डोंट नो ये कब से स्टार्ट हुआ है, बट द सूसी फॉर यंग वुमेन लीडर्स, लास्ट ईयर मुझे इसका पता लगा था तो मैंने इसको इंक्लूड किया, बिकॉज दिस ईयर आपको जो अप्लाई करना है वो एक फॉर्म है, उसके अंदर आपको दोनों में अप्लाई कर सकते हो. सो इफ़ यू आर अ फीमेल और आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, सो यू कैन अप्लाई फॉर द सूसी फॉर स्टूडेंट लीडर्स एज वेल एज सूसी फॉर यंग वुमेन लीडर्स टू. स्टूडेंट लीडर्स के अंदर 20 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड दे आर ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, बट द यंग वुमेन लीडर्स आर नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान. आई गेस 4 या 5 पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं और बाकी सारे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं. दिस इज होस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस. ऑल्सो बाकी चीज़ें मोर और लेस सेम होती हैं. इनका स्टडी टूर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैंने स्टडी टूर पिछली वाली स्लाइड में से जानबूझ के मिस किया है क्योंकि मैं आपको आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा. और इसका भी जो मेन चीज़ है वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है और इसके अंदर भी मोर और लेस सेम चीज़ें होती हैं. इसको इंक्लूड करने की वजह क्या थी कि आपको ये बात बता सकूं कि इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग तो आप दोनों में अप्लाई करो. इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस एडिशनल आंसर करने हैं अपार्ट फ्रॉम द सूसी एप्लीकेशन, और इस तरह आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हो. सो योर चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इंक्रीजेस. Moving forward, we have essential information. ये प्रोग्राम कब होता है? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू कम एंड आस्क मी कि हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टियां होंगी, अटेंडेंस का इशू होगा एंड ऑल. सो दिस प्रोग्राम इज ऑलवेज होस्टेड इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, अगर सब कंडीशंस ठीक हों
तो जून जुलाई के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज बंद होती हैं, तो इट इज़ अ 5 weeks फुली फंडेड प्रोग्राम. As I already stated that United States Department of State की तरफ से ये फंडेड होता है. इसके अंदर फंडिंग की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे कि जब आप अपनी एम्बेसी के ऊपर जाते हो टू अपीयर इन अ वीज़ा इंटरव्यू, वहाँ से लेके जब आप प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन में जाते हो, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन तक कैसे जाते हो उसका भी फेयर. ऑल्सो जब आप प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन में जहाँ पे भी रहते हो, दे होस्ट यू एट अ गुड होटल. उस होटल के चार्जेस, देन दे ट्रांसपोर्ट यू टू द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट से आप यूएस ट्रैवल करते हो, यूएस के अंदर आप आके जाते हो. वहाँ पर आपका जितना भी खर्चा होता है जो प्रोग्राम रिलेटेड होता है, नॉट फॉर द गिफ्टिंग एंड एवरीथिंग, कि अगर सपोज फॉर मी इट्स लाइक कि अगर मुझे जूते लेने हैं वहाँ से, शूज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो वो वाले जूते मुझे वहाँ पे अपने पैसों से लेने हैं. इफ आई वांट टू लाइक डू समथिंग, सम शॉपिंग फॉर माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, वो चीज़ें मुझे खुद करनी है. बट आपको जितना भी खर्चा लगेगा आपके खाने वगैरह के ऊपर, वो सब इंक्लूडेड होगा. द टाइम यू स्टे फॉर द एकेडमिक पार्ट ऑफ द सूसी एक्सचेंज प्रोग्राम, जब आप यूएस के अंदर हो गए तो वहाँ पे जितना भी आपका खाने का एक्सपेंस होगा वो आपको एक मील कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाएंगी. देन यू मूव टू द स्टडी टूर जो 9-10 दिन का होता है. उस 9-10 दिन के अंदर आपका जितना खर्चा होगा जो प्रोग्राम रिलेटेड है वो सारा कवर हो जाएगा. और वापसी आते हो, वापसी आने के बाद इफ़ यू आर अराइविंग इन लाहौर, बट फॉर मी जैसे मेरी डेस्टिनेशन बहावलपुर है, तो लाहौर से बहावलपुर का फेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा. सो इट इज़ डोर टू डोर फंडेड प्रोग्राम. एकोमोडेशन आपको यूएस के हॉस्टल्स के अंदर रखा जाता है विच आर वे वे गुड, लाइक बहुत टॉप क्लास हॉस्टल्स हैं. और डॉम्स जो हैं उनके वहाँ पे पता नहीं कोई 10-15 डॉम के ऑप्शंस हैं, उसमें से जो टॉप 3 है ना उसके अंदर में से किसी एक के अंदर रखा जाता है. फॉर द लास्ट 2 years आई नो इट इज़ द नॉर्थ अपार्टमेंट्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, बट आपको वहाँ पे रखा जाता है. मील्स आपको वहीं पे मिलती हैं, थोड़ी सी दूर आपको चल के जाना पड़ता है एक डाइनिंग के अंदर. इफ़ यू आर समवन who have special needs, like someone who uses a wheelchair or someone who uses crunches, तो उसकी भी proper आपको वहाँ पे facilities available हैं. Every single building is designed this way. आपको proper health coverage मिलती है. और अगर आपको कोई वहाँ पे incidental illness हो जाए like COVID, डेंगी, तो दो ये चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंट हैं उन कंट्रीज़ में बट हो जाती हैं. तो कोविड, डेंगी और कुछ भी ऐसा, तो आपको उसका ट्रीटमेंट मिलता है. Next step, to make this a little interested, I have included some photos and I'll be explaining each one of them. So this photo is जब हम कतर पहुंचे थे कराची से, so we took all 20 of us took a group photo. मैं इसके अंदर बिल्कुल सामने लेटा हुआ हूँ झंडे के सामने, if you can see. So this one on the left is from the United States General Assembly in New York. ये Google office in Boston नीचे वाली. Then this one is ईद मिलन पार्टी. हमने एक ईद डिनर होस्ट किया था, तो उसके ऊपर भी टोक अ ग्रुप फोटो. हमने खाना बनाया था फॉर एवरीवन, आवर मेंटोर्स, आवर एकेडमिक डायरेक्टर्स, जो आना चाहे हमने सबको इनवाइट किया था. एंड वाज अ ईद घर से दूर ऐसे ही मना सकते थे, तो वी ट्राइड आवर बेस्ट. So this one is one with the student mentors and my fellows. We were going to the opening ceremony. So this one on the top is at the Pakistani embassy in Washington, DC. This one is in front of the famous Harvard statue. This one is the Harvard University. Oh, this one is in front of the University of Massachusetts flagship campus का जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे वो. This one down here हमारी एक एक्टिविटी थी election simulation की. तो after the successful completion we took this group photo. The one on the top is in front of the United Nations. Then this one is from the Medium Tussauds in New York, and then this one is MIT in Boston. This lady was then the Consul General in New York. Right now she is representing Pakistan as the ambassador to Czech Republic. Moving forward, we have the eligibility criteria, who can apply. So if you are proficient in English, आपको कोई IELTS, TOEFL या इस तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना, but you just need to be proficient in English.
आपको इंग्लिश बोलनी आती हो, लिखनी आती हो और रिस्पॉन्ड करना आता हो। आपको बस इस तरह से आपको इंग्लिश इतनी आपको आती हो कि आपका कोई भी एकेडमिक पार्ट इसमें मिस आउट ना हो, कोई भी चीज़ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि आप इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सक रहे थे। सो दैट्स द क्राइटेरिया। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आइल्स पे 7, 8, 9 बैंड्स लेकर आने हैं या फिर टॉफल का स्कोर लेकर आना है। आपका पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी एज 18 to 25 के दरमियान होनी चाहिए। यू नीड टू शो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर कंट्री एंड योर यूनिवर्सिटी दैट यू आर गोइंग टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड कंप्लीट योर स्टडीज। आपका एक जो मेन इसके अंदर वो है कि यू नीड टू हैव 1 year और 1 semester ऑफ योर एजुकेशन लेफ्ट। सो इफ यू आर समवन जो आज 6th semester के अंदर है, लेट्स से 7th semester के अंदर है, जब वो अप्लाई कर रहा है तो दे कैन अप्लाई बिकॉज दिस इज अ स्पेशल सिनेरियो। अभी जब आप अप्लाई कर रहे हो आप 7th में हो, बट जब आप जाओगे तब आप 8th semester के अंदर मूव कर चुके होगे, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ यू आर इन योर फाइनल सेमेस्टर राइट नाउ यू कैन नॉट अप्लाई। तो मैंने इसको इजी करके समझा दिया। सो इस 7th semester प्रायर जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं आप इस अप्लाई कर सकते हो। सो यू नीड to have a strong curricular and extracurricular presence। आपका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एजुकेशन एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आई मेंशन द वर्ड एजुकेशन एक्सपोजर। सो इफ यू हैव बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर अपनी फैमिली के साथ किसी और रीजन से, दैट इज ओके, बट इफ यू हैव बीन ऑन अ फुली फंडेड या पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप देन यू आर नॉट एलिजिबल। और ये तो बेसिक्स होते हैं दैट यू नीड टू शो मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, you you should have what it takes to live independently in a foreign country. You should be confident, open-minded, respect each and everyone's political and religious beliefs. You should need to demonstrate tolerance and extreme tolerance because we know that these days people are not very tolerant, और social media के ऊपर we do see a lot of hate going on। तो आपको you need to be very focused that you are here for a specific thing और आपने वो पूरी करके वापस पाकिस्तान आना है। तो आपको किसी के रिलीजन, कलर, रेस या वो जेंडर, हाउ डू दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, इसके ऊपर बात नहीं करनी वहां जाके। आपको सबके लिए अपने ग्राउंड्स और अपने थॉट्स ओपन रखने हैं। यू शुड नॉट साइडलाइन देम इन एनी वे। यू शुड बी वेरी क्यूरियस एंड थॉटफुल टू। बाकी सारी चीजें तो आई गेस कवर हो गई हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव तो अप्लाई कैसे करना है। सो दिस ईयर द पैटर्न हैज चेंज्ड अ लिटिल। you need to apply by the embassy's website। embassy की website ये given है। so when you will go to this website आप लोग screenshot ले सकते हो इस चीज का, या डायरेक्टली आप गूगल पे जाके टाइप करो SUSI SUSI पाकिस्तान, बस इतनी सी बात। आगे 22 23 लिखने की जरूरत नहीं है। so this way when you will reach there आपको वो एम्बेसी की वेबसाइट आ जाएगी, उसको स्क्रॉल करोगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर एक गूगल फॉर्म ओपन होगा और वो गूगल फॉर्म ओपन कर लेना और वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या बात हो गई, पहले होता था कि गूगल डॉक्यूमेंट एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट होता था जो आपने डाउनलोड कर लेना होता था और उसको फिल करके ईमेल कर देना होता था एम्बेसी को। दिस ईयर इट्स डिफरेंट, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो इससे क्या हो रहा है, एक तो आप ना इसको सेव नहीं कर सकते। सो अगर आपने गूगल फॉर्म एक दफ़ा पहले खोलो, उसके अंदर कुछ भी डाटा फिल करके आगे आगे करके एक दफ़ा कंप्लीट पढ़ लो, सो दैट यू नो कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। फिर आप उसको दोबारा से फिल आउट करना शुरू करो। डू नॉट सेंड दैट वो जो आपने टेम्परेरी नेम या एड्रेस वगैरह लिख के सबमिट फाइनल तक गए थे जस्ट सो यू कैन सी व्हाट इज इन द फॉर्म, वो सबमिट ना करना, प्लीज ना करना। आप अपना फिर दोबारा से फिल इन करना स्टार्ट करो एंड जस्ट मेक श्योर कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास बिफोर हैंड कंप्लीटेड हो, ताकि आप बस उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करो या जो आंसर्स आप जल्दी लिख सकते हो वो लिखो। और टू इसको बार बार पढ़ लेना बिकॉज यहाँ पर आपको प्रूफ रीड करने की बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो साथ साथ हर चीज़ प्रूफ रीड करते जाना एंड देन जस्ट सबमिट इट। इसको आपने ईमेल नहीं करना, आपने गूगल फॉर्म फिल करके सो जाना है। सो 5 नवंबर को आखिरी डेट है, एप्लीकेशन 6 अक्टूबर से ओपन है, इट्स ऑलरेडी बीन द 3rd डे। और just take a special emphasis on your statement of purpose as well as in the essay questions। Selection process क्या होता है? So once the embassy website this year says
कि जब आप ये फिल कर दोगे 5 नवंबर को, उसके बाद 22 दिसंबर से पहले पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग की ईमेल्स आ जाएंगी. सो ओनली द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स गेट अ ऑनलाइन इंटरव्यू, या फिर इन पर्सन भी हो सकता है. ये वो स्विच करते रहते हैं कि कौन सी सिटी वगैरह में आप बेस्ड हो. तो आपका शॉर्टलिस्ट हो गए जब आप एक बार, आपको एक इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है, तो 22 दिसंबर को लेट से आपको ईमेल आ रही है कि आप सिलेक्ट हो गए हो. ओनली द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट एन ईमेल, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स. जो लोग नहीं हुए उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. आपका एक ऑनलाइन या इन पर्सन इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी. सो यू विल बी कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स. वन विल बी द प्रिंसिपल कैंडिडेट्स जो टॉप 20 ऑन द लिस्ट होंगे. द अदर वंस विल बी अल्टरनेट कैंडिडेट्स. अल्टरनेट कैंडिडेट्स कितने होते हैं नोबडी नोज. समवन सेज वन फ्रॉम ईच प्रोविंस, आई डोंट नो. इस तरह से तो 20 स्टूडेंट्स फाइनली ट्रेवल करते हैं यूएस के अंदर आफ्टर देयर एंटायर प्रोसेसेस कंप्लीटेड. सो लेट्स फॉर जस्ट अ रिकैप, नवंबर तक आप अप्लाई करोगे. दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर आपको जाके फर्स्ट सिलेक्शन या इंटरव्यू कॉल आएगी. उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा अगले 2 एक हफ्ते के अंदर. लेट से जनवरी के पहले 10 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू हो गया, और जनवरी के बाद आपको, जनवरी के बाद मार्च के मिड के अंदर कहीं जाके आपको फाइनल सिलेक्शन ईमेल आएगी. और उसके 2 महीने बाद आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा, और वीज़ा इंटरव्यू के 2 से ढाई हफ्ते बाद, 2 और 2.5 वीक्स आफ्टरवर्ड्स आपकी डिपार्चर डेट होगी. So till now, if you guys have any questions, you can ask. What is the end date and how to apply? So Wakas, I just answered it कि लास्ट डेट है 5 नवंबर. और आपको अप्लाई किस तरह करना है, वो एक गूगल पे जाओ, लिखो सूसी पाकिस्तान, और एक एम्बेसी का लिंक ओपन होगा. उसके अंदर स्क्रॉल डाउन करो एंड यू विल फाइंड के एक गूगल फॉर्म को हाइपर लिंक किया हुआ है. वहाँ पे लिखा होगा अप्लाई हेयर. अप्लाई हेयर पे क्लिक कर दो, एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, और उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दो. दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली फ्री. Which countries are eligible to apply? So if you are from Pakistan, you can apply. If you are a permanent resident in Pakistan, you can also apply for this particular program. But for if you are from the North African or the Middle Eastern countries, you can apply for the SUSI for Economic Empowerment Program, or you can just contact your embassy and see if your country is eligible for any US funded program. Only have IELTS? No, you do not need any IELTS. Is fourth year medical students can apply? Okay, so Neha, yes, if you are in fourth year right now, तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपका फोर्थ ईयर का प्रॉफ नहीं हुआ, अगर आप फाइनल ईयर स्टार्ट कर चुके हो, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते. आप अभी अप्लाई कर दो, तो जब आप जाओगे आप फाइनल ईयर में होगे. बट जब आपने अप्लाई किया था फोर्थ ईयर में, तो सो यस, यू कैन अप्लाई. Tips for personal statement question. I will keep this question for afterwards. जब मैं personal statement और questions के ऊपर आऊँगा, तब मैं इसके बारे में ज़्यादा बता दूँगा. सर, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं हो, पर उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, सो यार, these guys have been running this program for the last 15 years. So by this time they do not ask for the certificates, because they know कि किसने अगर झूठ बोल रहे होते हो अगर कोई, तो वो पकड़ा जाता है. So if you have really done something, just put it there and have someone to back you if that need arises. अगर कोई आपसे पूछे, they can ask you के provide certificates or anything, then you can show an email और इस तरह की कोई चीज. But this is a very rare case scenario. If you have actually done it, just present it in a good way और उसके बारे में हर चीज बताओ. What is your key learning from the whole experience? So it was a very inclusive program. So it made me independent, confident. Public speaking skills बहुत enhance हो गए हैं. Understanding of the global perspectives and how the big democracies and countries work. The infrastructure, the education system, the classroom experience itself, how the difference between the Pakistani education system and the US education system. Also, अगर आप आसपास देखते हो, तो you see that आप ज़्यादा दूर नहीं हो इनसे in terms of
योर क्रिएशन फिर 100 150 साल का फ़र्क है, बट देन वो आपसे बहुत आगे हैं. सो यू जस्ट कंपेयर हाउ you are lacking and why you are lacking in your home country. की लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर इसके अंदर इंक्लूड तो it was a very wholesome program to say with a minimum use of words. Yeah, so Usman आगे चलो. Next question. What strategies did you follow and want us to follow this time? Yeah, be honest, be yourself, do not lie at all at any stage. जो चीज़ किया उसको अच्छे से प्रेजेंट करो. Try to not brag it, but उसको पूरा भी बताना है और उसके बारे में कुछ आपने ब्रैग भी नहीं करना और उसका इम्पैक्ट डिस्क्राइब जरूर करना. बी योर सेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लोग एसओपीज किसी और से लिखवा रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं किसी को लिखवाने के लिए, मुझे मैसेज करते हैं कि सेंड अस योर एसओपी. आई कैन टेल यू हाउ एन एसओपी शुड लुक लाइक, बट आई कैन नॉट सेंड यू माइन. तो इस तरह से आप बस कोशिश करो कि जो करो खुद करो, और बिकॉज नोबडी नोज यू बेटर. Is it valuable for engineering students? To be very honest, it is valuable for every student. If you're an undergraduate student in Pakistan, you should definitely apply because it gives you a global exposure, also enhances your personality, and in the end, it is a fully funded program. Can we write our background achievement and future goal in SOP? Yes, यही सब चीजें ही लिखनी होती हैं एसओपी के अंदर, टू से द लीस्ट. बस इसके अंदर आपने अपना नाम सामने लिखना. एसओपी के ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ. अभी आगे एसओपी की ही स्लाइड आने लगी है. What do you think you could have done better to improve your application? I guess I did my application the right way. Also मेरी application के अंदर एक spelling mistake थी which I realized बाद में because I was in a hurry. 20 seats, I think there's no chance. 20 seats out of thousands who apply, but the 20 still get in. Don't underestimate yourself. I used to underestimate myself too. मेरी जिससे भी बात हुई है वो सभी अंडरएस्टिमेट करते थे अपने आप को, बट जस्ट हैव हाई होप्स. दुआ करते रहो. आई अप्लाइड फॉर यूग्रेड वर्टिकल सेक्टर. अच्छा यार, सूसी के लिए सिलेक्ट हो जाओ और यूग्रेड की एप्लीकेशन रहती हो, ऐसा नहीं होता बिकॉज सूसी की सिलेक्शन आपकी मार्च में जाके होगी और यूग्रेड हमेशा पहले ही पता चल जाता है. Also, if you are selected for UGRAD, do choose UGRAD because UGRAD is it's entire semester जो कि आपकी डिग्री या फिर आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा होता है. 4 महीने का प्रोग्राम होता है. दिस इज अ 5 weeks प्रोग्राम विच इज सवा महीना. सो UGRAD versus SUSI, which is better? These both are entirely different things. UGRAD और SUSI. चलो मैं जल्दी जल्दी कंपैरिजन. SUSI is a cultural exchange. यूग्रेड के अंदर 4 महीने होते हैं, सोसी के अंदर 5 हफ्ते होते हैं. यूग्रेड के लिए आप
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको एंड सॉरी फॉर दैट। ब्लैक तो नहीं है बट जैसे भी स्क्रीन है काइंडली बता दें अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो। एंड जैन के साथ इशू आ गया तो वो हमें जो है वो बहुत जल्द ही दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे विद इन जस्ट 5 मिनट्स। ओके दैट्स परफेक्ट। एंड जैन हमें लाइक विद इन जैन दोबारा ऑलमोस्ट आ चुके हैं हमारे पास। एंड उनको हम दोबारा जो है वो ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। uh, जी जैन। Sorry guys, there was internet connectivity issues. I guess now you guys can hear me. Just let me know, Usman. बिल्कुल बिल्कुल जैन आपकी आवाज़ आ रही है। चलो, आई विल बी प्रेजेंटिंग नाउ और जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो फिर हम इसको एंड के अंदर फिर से कर लेते बिल्कुल हैं, ठीक बिल्कुल है? ठीक है। ओके चलो, ओके थैंक यू। ओके सो वी वर हियर। नेक्स्ट, अच्छा ये पर्सनल स्टेटमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। सो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वहीं से आपके फॉर्म में से। पर्सनल स्टेटमेंट 250 वर्ड्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए बिकॉज आई टॉक टू समवन एट द काउंसलेट एंड दे सेड कि ये पूरी आपकी जो एप्लीकेशन होती है ना, इसके पॉइंट्स होते हैं, हर चीज़ की स्कोरिंग होती है बिकॉज एट द एंड दे नीड टू जस्टिफाई योर सिलेक्शन और रिजेक्शन। अगर कभी उनसे कोई सवाल हो जाए, वैसे होता नहीं है लेकिन स्टिल दे हैव लाइक अ प्रॉपर क्राइटेरिया। तो अगर आपकी 250 वर्ड से एक्सीड हो रही है तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। डोंट जस्ट गो लाइक कि मुझे अपने बारे में और बताना है सो यू गो ओवर द 250 वर्ड्स लिमिट। just try to cater your personal statement within the 250 word mark. It should be single spaced और इसके अंदर अच्छा देखो, पर्सनल स्टेटमेंट को इस तरह से लो। आई डू टेल पीपल दिस दैट अगर कोई बंदा आपको जानता नहीं है, उसने आपको देखा हुआ नहीं है, वो आपसे मिला हुआ नहीं है, बट यू नीड टू टेल अबाउट योर सेल्फ, अबाउट वट यू डू और आपने फ्यूचर में क्या करना है और आप क्या करना क्या करना चाहते हो और अपनी मीन्स अगर आपकी इंक्रीज हो जाए लाइक समथिंग दैट यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन। अगर आपको एक फंडिंग मिल जाए या फिर आपका एजुकेशन सिनेरियो चेंज हो जाए लाइक यू ट्रेवल टू अनदर कंट्री और आपको वहाँ पे एजुकेशन मिले, तो ये सब आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा और आपका जो एक इनिशियल आपने एक अपने लिए एक डेस्टिनेशन सेट की हुई थी, लाइफ गोल सेट किया हुआ था, ये उसको कितना हेल्प करेगा। तो आपने उस तरह से बताना है सब। डू नॉट राइट कि मेरा नाम जैन है, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं इतने साल का हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स में ऑलरेडी लिख चुके होते हो। अच्छा इसके अंदर है कि अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है कि आप एक किसी भी इंटरव्यू के अंदर आप प्रिपेयर हो ना, दे डू आस्क यू दैट what do you bring to the table also or what do you bring to the program। तो आपने ये बताना है दैट आप कितने डाइवर्स हो या फिर आप कितने आप क्या एडिशनल ला सकते हो बाकी सबके एक्सपीरियंसेस के अंदर, आप अपने एक्सपीरियंसेस किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल बना सकते हो। और ये लास्ट वाला जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हाउ इज दिस प्रोग्राम गोइंग टू हेल्प यू एकेडमिकली प्रोफेशनली राइट नाउ एंड इन फ्यूचर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एसओपी के एक बेसिक डिटेल्स के बारे में मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है और ये 250 वर्ड्स कैसे होता है। हर प्रोग्राम के लिए एसओपी की गाइडलाइंस डिफरेंट होती हैं बट आई गेस यूग्रेड और सूसी के लिए मोरलेस सेम है, 250 वर्ड्स ही हैं दोनों के अंदर। और इसके अंदर आपने अपनी एकेडमिक गोल्स एक्सप्लेन करने होते हैं और पर्सनल गोल्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं। यू डोंट वांट टू से कि आपको एक पूरी दुनिया घूमनी है इसलिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स जाना है, इस तरह की बात नहीं करनी आपने इसके अंदर। या आपका बैकग्राउंड और मोटिवेशंस और एम्बिशंस को डिफाइन करे और अच्छे से बताए। और एक सिलेक्शन कमेटी, वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो किस तरह से आपको परसीव करे, आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं उनके सामने। बी ऑनेस्ट इन दिस। और इसके अंदर आपका एक इंट्रोडक्शन होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाउ यू आर को रिलेटिंग योर एजुकेशन वर्सेज योर फ्यूचर गोल्स। आपने जो लाइफ के अंदर कोई को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर स्टफ किया उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, फ्यूचर गोल्स, व्हाई आर यू सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और बस बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ।
Yeah, again, this is a screenshot from your application process. So the left one is for SUSI for student leaders, जिसके ऊपर मैं क्या था. The right one is for SUSI Albright Young Women Leadership, which is hosted by the University of Kansas. But इसकी भी selection same procedure से हो रही होती है. ये for females only है. बाकी criteria इसका भी same है, 18 to 50, 18 to 25 years of age. अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे देखो, ये एसे क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है. यू नीड टू टॉक अबाउट 2 एसे क्वेश्चंस, और इफ यू आर अ फीमेल हु इज अप्लाइंग टू बोथ ऑफ द प्रोग्राम्स, तो उसको 2 सूसी के भी करने हैं और 2 सूसी फॉर वुमेन लीडर्स के लिए भी करने हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक. Number 1 says, what one initiative would you be interested to initiate on a national level in Pakistan? If you were in a leadership role, how would you plan it, implement and measure its success? So अगर आप देखो, we all are a very good social media warrior. हम keyboard warriors हैं. We criticize a lot. Like, this is our right to criticize. तो आप अपने आसपास देखो, which one thing you think that you can fix in this country, और आपको कोई एक चीज इंक्लूड करनी है. फॉर एज लिटिल एज आप कह सकते हो कि आप वाटर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान के लिए करना चाहते हो, फिर उसको पूरा एक डिज़ाइन करो और इसको एक मिनिमम 150 से 250 वर्ड्स के अंदर ही आपने इसको आंसर करना है कि आप किस तरह वो पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे, उसकी पब्लिक मार्केटिंग किस तरह करोगे, और उसको आप किस तरह इम्प्लीमेंट कराओगे, और उसकी सक्सेस रेट किस तरह मॉनिटर करोगे. इट कैन बी एनीथिंग. इनिशिएटिव आपका कुछ भी हो सकता है. आपने ये देखना है कि उस इनिशिएटिव को आपने लेके चलना है, नॉट दैट कि आप कहो कि मैं किसी को हायर कर लूंगा ये सारा काम करने के लिए. नो, आपने उसको आगे लीड करना है. The other one is, give one example of a policy in Pakistan which you believe needs improvement. If you had the power, how would you change it to make it better or more effective? So, Pakistan was formed in 1947 और बहुत सारी policies ऐसी हैं जो time to time revise होती रहती हैं, but still there are policies which need, जो time के साथ revise नहीं हुई या फिर ineffective हो चुकी हैं. So, just for example, if I tell you, अब ये सारे जाके लिखना देना कि जो ट्रैफिक लॉज हैं पाकिस्तान के, यूएस के अंदर लीगल ड्राइविंग एज 16 वर्सेस पाकिस्तान में लीगल ड्राइविंग एज 18. आप इसको अगर सोचो कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये 16 हो जाए, सो देयर वुड बी मोर पीपल हु वुड गेट अ लाइसेंस टू ड्राइव. लाइसेंस टू ड्राइव ज़्यादा होगा तो रूल्स ज़्यादा इंप्लीमेंट होंगे ना रोड्स के ऊपर. तो जस्ट दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. तो अगर आप सारे ये लिख दोगे तो समझ आ जाएगी कि आपने किसी से सुना हुआ है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. There are a lot of policies in Pakistan. Just think, Google करो इसको, अपनी रिसर्च करो, अपने बड़ों से पूछो जो थोड़ा सा पॉलिसी वगैरह को जानते हैं. इफ़ यू नो समवन इन द सिविल सर्विसेज, उनसे एक दफ़ा मशवरा कर लो. कुछ भी कर सकते हो, और यू कैन जस्ट गो ऑन योर ओन. और इसको जस्ट मेक श्योर कि आप एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करो. ये यू आर नॉट एन इंडिविजुअल जो कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर कर आ रहा है या फिर जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है. दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय दिस पॉइंट. फ्यूचर के अंदर शायद आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लो, बट आपने उसको ये कहना है कि ये चीज़ आपने खुद फील किया है कि आप किस तरह से इसको बेहतर करोगे या फिर कौन सी पॉलिसी और बेहतर हो सकती है. वो उनको पता है. यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट. दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी एन एक्सपर्ट, but they expect you to have a voice, to have a conscience, to differentiate between what needs improvement and what is going well. I guess itna iske liye kafi hai. For the right side, this is again, I am going to tell that this program SUSI for women leaders is female exclusive. तो लड़के बिल्कुल भी इसके अंदर बोथ पे अप्लाई ना करें. इसको अप्लाई करते हुए आपके अपने ही नेगेटिव मार्किंग होगी. जस्ट डोंट थिंक कि वो लोग आपको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से. इफ़ यू आर अ फीमेल ओनली देन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. अच्छा, इसके अंदर आपने 2 क्वेश्चन, आपने अगर इस प्रोग्राम के लिए खाली अप्लाई कर रहे हो तो ओनली दीज 2 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड. बट अगर आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करो, विच आई सपोज के ज़्यादातर लड़कियां दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगी, तो आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं. सो what are the 3 main challenges in Pakistan female leaders face in Pakistani society? How do you think this affects their performance at work? These are वेरी इजी क्वेश्चंस. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं. एज अ फीमेल आप इसको सोचो और इसके अंदर लिख दो. अगेन 150 to 250 वर्ड्स आपने इसके माइंड के अंदर रखने हैं कि इससे ज़्यादा नहीं लिखना. और दूसरा इज़ लाइक माय, बचपन के अंदर हम लिखते होते थे माय आइडियल पर्सनैलिटी. तो उसके अंदर आपने बस थोड़ा सा चेंज ये किया है कि उस आइडियल पर्सनैलिटी हैज़ टू बी अ फीमेल. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पाकिस्तानी फीमेल लीडर यू एडमायर एंड डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ दैट मेक हर एन इफेक्टिव लीडर. सो स्टार्ट कर लो
मोहतरमा फातिमा जिन्ना, द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान, बिगिनिंग फ्रॉम देयर। और आप आ जाओ टू मैडम नूर जहां, बेनज़ीर भुट्टो, ऑल द पॉलिटिशियंस या फिर पब्लिक सर्विस ऑफिशियल्स जो सिविल सर्विसेज के अंदर हैं, इस तरह से आप किसी को भी मेंशन कर सकते हो। यू कैन नेम अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन टू, या फिर आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट दे हैव टू बी अ फीमेल लीडर और कोई लीडरशिप पोजीशन के अंदर हो। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ बातें आपने याद रखनी है कि आपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब आप लिख रहे हो तो आप इतना बड़ा आंसर लिख लो और उसको फिर कंसाइज करके 250 वर्ड्स के अंदर समराइज कर दो। मेरा मशवरा ये होगा कि आप इन क्वेश्चंस को पहले गूगल डॉक्यूमेंट पे लिख लो, प्रूफ रीड कर लो, ग्रामर चेक कर लो और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दो। अगर आपका कोई एलमनाई आप जानने वालों में से है, किसी को रीच आउट कर सकते हो। सपोज मैं भी हूँ एक एलमनाई, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो। यू कैन राइट एन आंसर एंड सबमिट इट टू देम एंड आस्क देयर फीडबैक। अगेन फाइनल डिसीजन आपका अपना होगा। क्राफ्ट अ क्लियर नैरेटिव। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये बात है कि आप जो भी बात कर रहे हो ना, उसके अंदर आपने इधर उधर नहीं करना, या मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगा। गो अबाउट वन थिंग और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और बी कंसाइज। 150 टू 250 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने ना इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, दीज आर सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के इस प्रोसेस की क्या फीस है। दिस प्रोसेस इज एंटायरली फ्री, एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है। यू जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन अप्लाई करने के लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए कोई आइल्स या टॉफल नहीं चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम से पहले पासपोर्ट है विच इज़ वेल एंड गुड, चाहिए नहीं। इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन यू कैन गो एंड मेक वन पासपोर्ट, मतलब आप जाके पासपोर्ट बनवा सकते हो। academic excellence is not the entirety of the selection criteria. If you have a good academic record, it is a plus point. But if you are someone who has been a mediocre student, you still have an equal chance because आप अपने co-curriculars और extra curriculars से justify कर सकते हो। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है, और रिकमेंडेशन लेटर्स या सर्टिफिकेट्स की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। और just make sure that you stay honest and authentic. So here we are back at the question slide. So Usman, just let me know कि कौन से questions आ रहे हैं। Any discipline? Okay Usman, I guess I have answered this previously too कि सारे disciplines equal stand करते हैं। How can you differentiate with your application? Just make sure that you are very honest और अपनी हर चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो उसके अंदर। और स्टैंड आउट तो आपको खुद पता होगा ना। इफ़ यू आर डन समथिंग वर्थवाइल इन योर लाइफ देन ऑब्वियसली यू विल स्टैंड आउट। डोंट वरी, आप ये ना सोचो कि आप सेलेक्ट नहीं हो गए। Is this video will be uploaded again? Yes, this will be present on this Scholarship Insights YouTube page. भाई इन दोनों क्वेश्चंस का एक दूसरे से रिलेटेड होना लाजमी है। नो, दिस डू नॉट हैव टू बी रिलेटेड। आप कुछ भी इनिशिएटिव ले सकते हो और एक पॉलिसी को कह सकते हो कि वो अच्छी नहीं थी। दोनों अलग-अलग हो सकते हैं। This female leader should only be political. No, this does not have to be political. It can be female leader, कोई भी। Seventh semester, if you are in seventh semester right now, when you are applying, yes, you are eligible. Can we submit our UGRO or SCP changes? Yes, yes, you can submit it. What do we mean by policy making? Like we will lead a team and perform tasks? No, 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 no. ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। जैसे आप सोचो तो आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, ये भी वैसी होंगी कि आपको एक स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके, सपोज अगर 20 टास्क आपने वहां पर करने हैं तो 20 में से 4-5 होंगे जो ग्रुप बेस्ड होंगे। मतलब जो आपने इसेंशियली स्टेज के ऊपर जाकर प्रेजेंट करना होगा। बाकी सारी आपके बस लेक्चर्स होंगे और आपका इंडिविजुअल आउटपुट होगा जो आप अपने समझोगे और आप अपनी क्लास से शेयर करोगे। यार शॉर्टलिस्ट
कि कोई मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट आई हैव हर्ड के डबल शॉर्टलिस्ट होते हैं और उसमें से फिर लाइक अगर 50 शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं तो 20 सिलेक्ट हो जाते हैं और 5 ऑल्टरनेट्स में चले जाते हैं. यार any type of volunteer work, because volunteer work is very essential in your career. और आपने as little as blood donation, water scarcity projects and everything, कुछ भी लिखो, पर जो भी किया उसको अच्छे से लिखो और be honest, please do not lie in the application at all. आपने अपनी बारी में डिफरेंट आंसर्स थे दोनों क्वेश्चंस के. यस, मेरे आंसर्स डिफरेंट थे. Yes, DPT students can apply to. Medical students can plan a national health activity that needs to be improved, like in current times awareness. यार आप अपनी ये पूरी जो भी आपका आइडिया था वो आपने अब सबसे शेयर कर लिया है. एनीवन कैन लिटरली इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है. आई विल नॉट कमेंट कि ये अच्छा था या बुरा था. Do you have to tell them the policy you want to change in society, or we can just write according to our field? यार इट कैन बी बोथ. आप अपनी फील्ड के रिलेटेड भी एक पॉलिसी बता सकते हो, या फिर जस्ट मेक श्योर कि वो आपकी फील्ड के नेशनल लेवल से स्टार्ट हो. लाइक इफ यू आर इन हेल्थ केयर तो आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है जो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो. I studied political science in associate degree. There was no subject of public policy, or unfortunately, can I tell in SOP that although I chose English BS, yes, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पब्लिक पॉलिसी पहले से पढ़ी होनी चाहिए. यू जस्ट नीड टू हैव एन इंटरेस्ट इन पब्लिक पॉलिसी, दैट्स ऑल. आपको पता हो कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या. आई नो नथिंग अबाउट पब्लिक पॉलिसी, शुड आई स्टिल अप्लाई? या गूगल करके पहले पढ़ लो व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी एंड देन यू शुड अप्लाई. इज देयर एनीथिंग यू रिग्रेट अबाउट द होल एक्सपीरियंस? Yes, I regret sleeping in the whole experience because I, though I tried to make most out of it, but still 5 weeks are कभी-कभी लगता है कि और होने चाहिए थे. For SUSI also CGPA affects in selection, same as you grade or not, and what are the main key elements to get selected? That as I have said that your academic is not the entirety of it. Just make sure कि आपका जो co-curricular और extra curricular aspect है application का वो भी साथ-साथ लेके चलो. If we mention community work in SOP, will it be okay? यार देखो, कम्युनिटी वर्क, वॉलंटियर वर्क के लिए उन्होंने स्पेशल सेक्शन बना के दिया हुआ है. जस्ट मेक श्योर कि आप उसको पहले फिल कर लो, हर चीज उसमें बता दो. Why do you want to waste your SOP के वर्ड्स on this thing जो आप एक ऑलरेडी सेक्शन में डिफाइन कर चुके हो? हाँ, अब आप उस कम्युनिटी सर्विस क्यों करते थे वो चीजें आप बाद में अपनी SOP में इंटीग्रेट कर सकते हो. सर, आई हैव टू अप्लाई ऑन बोथ एप्लीकेशन डिफरेंटली. नो, एक ही गूगल फॉर्म है, उसके अंदर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो. What is the best? So Zain Fayyaz says, what is the best memory of your SUSI experience? Did it shape you to become a better version of yourself? That there are a lot of memories from this entire experience, like the campus life in the United States versus the friends that I made there. उनके साथ घूमना, बाहर जाना, the independent life, cooking in my apartment, like cooking, कोई मैं कढ़ाइयाँ नहीं बना रहा था वहाँ पे, but anything like as little as the Maggi noodles and everything, वो लेके. These are the memories versus जो ग्रुप टास्क होते थे. ग्रुप टास्क से पहले जो पिछली रात पैनिक होता था, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर देयर, हम वहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे, तो हर चीज लास्ट मोमेंट तक डिले कर देना और फिर आखिरी रात बैठ के सारा काम कर लेना और सुबह जाके उसको प्रेजेंट कर देना. versus the study tour itself, that for me New York is still my dream city and one day I aspire to live in the New York. तो न्यूयॉर्क जाना, टाइम स्क्वायर पे जाना, ये सारी चीज़ें are one of the core memories I have made in the US. सर, क्या हम अपनी कम्युनिटी को फोकस कर सकते हैं एज अ गोल और पॉलिसी मेकिंग, या पूरे पाकिस्तान के लिए बताना है? यार पूरे पाकिस्तान के लिए बताना है, बिकॉज इट इज मेंशन्ड दैट नेशनल लेवल की पॉलिसी होनी चाहिए. English proficiency matters. Yes, English is very important. If you cannot understand English or if you cannot communicate freely in English, how are you supposed to participate entirely in the program? So just इसके लिए कोई IELTS या TOEFL नहीं चाहिए, but still you need to be proficient in English. If someone has never visited the UAE in the entire life but has visited another country like India, are they eligible? Yes, आप किसी भी country में जाओ, you are eligible.
कोई फंडेड प्रोग्राम के ऊपर आप यूनाइटेड स्टेट्स वाले पे पहले ना जा चुके हो. व्हाट अबाउट एसओपी? यार आई हैव, when this session is posted you can just fast forward it to the SOP part. I have talked in detail what an SOP is. How can I connect my extracurriculars of digital media to public policy? यार, these days virtual experiences have the same impact as आपने इन पर्सन कोई चीज़ किया हो तो आप उसको जस्ट मेक श्योर दैट व्हाट वाज योर माइंडसेट, आपने वो चीज़ क्यों ज्वाइन की और उसका फिर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ. और इसको आपको पब्लिक पॉलिसी से एज सच रिलेट करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू शो कि आपके फ्यूचर गोल्स के साथ कितनी अलाइन होती है. SOP and answer of those questions must be related. No, SOP आपकी एकेडमिक और आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर है. ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो एक क्वेश्चन उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, उसको आंसर करना है. इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. अलग अलग भी कर सकते हो आप. थैंक फॉर योर गाइडेंस. मोस्ट वेलकम. Do we have any other questions, Usman? Or I should just end the webinar here? So I guess that's all. I will be moving to the presentation. Can we use SOP of UGRAD? Yes, you can, but उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको. Because वहाँ पे आप लिखोगे कि I want to be a part of the global UGRAD, but इसके अंदर आपको SUSI के लिए जाना है. Thank for such a detailed session and answering all questions. Most welcome. Most welcome. Usman, just give me a while. I will be presenting my screen again. और उसके अंदर so if you guys still have questions you can just connect with me using Instagram, Twitter or email ID. You can take a screenshot of this. You can send me your queries if you want to. If you want me to read your statement of purpose, उसको रिव्यू करवाना चाहते हो तो मेक श्योर कि फाइनल डेट से कम 10 दिन पहले आप मुझे वो चीज़ भेज दो ताकि मैं उसको पढ़ के आपको बता दूं इज इट फाइन और नॉट. आप मुझे ईमेल कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर द सब्जेक्ट क्लियरली सेज दैट रिव्यू द पर्सनल स्टेटमेंट. इस तरह से कुछ भी रिव्यू का वर्ड लास्ट में लिखना उसके अंदर. सो मेट विद Zain Siddiqui 09 and I am zain@gmail.com. Once again, thank you to Scholarship Insights and the entire team for having me. Thank you, Usman, and thank you, Noor. Okay. Now we are done with the question answer sessions. Thank you so much, Zain, for joining us and for sharing such a valuable knowledge with us. Thank you so much, everyone, for joining us. Good night and Allah Hafiz. Allah Hafiz.